Okay, students, so we discussed theoretical part for electrostatics. Now it's time that we apply that theory to solve some questions. So the first question is, 2 point masses with charges Q1 and Q2 are placed in vacuum with dielectric medium between them. So what is the Coulomb's force between them? Okay, so this is the charges Q1 and Q2 and the K is between them. So in the second part, the charge Q is placed in the dielectric itself. So then you have to find the net forces on Q1 and Q2. So do you have any idea कि कैसे आप अप्रोच करोगे? इनिशियली आपको कुछ दिक्कतें लग रही हैं? इनिशियल मुझे एक कंफ्यूजन है कि डाइलेक्ट्रिक से हाउ डू आई फाइंड द नेट फोर्स नहीं, मुझे सेकंड पार्ट तो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है, फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. अच्छा, तो इसका आंसर सिंपली होगा फर्स्ट पार्ट का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, where R is equal to 1 plus 1 plus 1. कुछ अजीब लगा तुम्हें? इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट नहीं कंसिडर नहीं किया. एग्जैक्टली. ओके, मैं भी वही बताना चाहता हूँ, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हम तभी कंसिडर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है वो, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर ही उसका इफेक्ट होता है. उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर? हाँ, उसके अंदर हर पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है, उसके बाहर उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है. ओके. हाँ. तो सेकंड क्वेश्चन में ये एक छोटा सा मैं बता सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है. ओके. एक एग्जांपल देखते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक है और यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, ई बार है. तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा. सो बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड चार्जेस ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो हमारे ई बार के अपोजिट है. तो इसीलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कम हो जाती है और ये इफेक्ट बेसिकली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो E माइनस E डैश है. हाँ. E वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. हाँ. सो E नेट इज इक्वल टू E जो नॉर्मल है प्लस E बार इंड्यूस्ड. ओके. तो E के फॉर्मूला में क्या होगा, 1 जनरली E के फॉर्मूला में K हम लोग ये लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E नेट के फॉर्मूले में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मीडियम. ओके. तो ऐसे लिखा जाता है. और इसका इफेक्ट बाहर क्यों नहीं होता इन चार्जेस जो इंड्यूस्ड है? जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेलल ये जो शीट्स हैं, हाँ, जैसे मान लो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी बाहर के पॉइंट के बारे में. ओके. और बिकॉज ऑफ दिस प्लेट, हाँ, दिस शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी. तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं और बाहर इन इंड्यूस्ड चार्जेस का इफेक्ट नहीं होता. ओके. मतलब अंदर की तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, अंदर की तरफ दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं. हाँ. और दोनों एड अप होते हैं और नेट ई इंड्यूस्ड बनाते हैं. ओके. तो ये हमेशा याद रखना, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट सिर्फ उसके अंदर ही होता है. अगर ऐसे मैंने रख दिया है बीच में डाइलेक्ट्रिक और दो चार्जेस बाहर हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना. ओके. तो आंसर बहुत सिंपल है. तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, यूजिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इन दिस केस हमने चार्ज Q2 को डाइलेक्ट्रिक में लगा दिया.
ओके. हाँ. और डिस्टेंसेस मैंने दिए हैं 1 मीटर और ऐसे 1 मीटर. ओके. और ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. तो हाँ, अब क्या करोगे? अब तुम फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट लगाओगे या एप्सिलॉन लगाओगे? कंफ्यूजन हो गई. एग्जैक्टली. और अगर तुमने ऐसा किया कि एक जगह एप्सिलॉन लगा दिया, एक जगह एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, तो फिर न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे ओबे होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम. तो हाँ, तो इसके लिए अगर देखो ध्यान से कि याद रखो कि ये जो ई है वो ई नेट है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके. ठीक है. इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स ऑन Q1 एंड नेट फोर्स ऑन Q2 सेम नहीं होंगे. ओके. बट फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2 सेम होगा एज फोर्सेस ऑन Q2 ड्यू टू Q1. ओके. मतलब कि जो Q1 पर फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. बट बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो वो फोर्स है वो चेंज हो गया. हाँ, डाइलेक्ट्रिक वजह से नेट फोर्स चेंज हो गया ऑन Q2. ओके. बट जो सिर्फ Q1 की वजह से है वो सेम ही है. सो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? फाइंड द नेट फोर्स. अगर आप ध्यान दें तो नेट फोर्स विल अगेन बी द सेम. यहाँ पे R 2 मीटर है ये. ओके. एंड फॉर Q2 एंड फॉर Q1 Q2 दोनों पे मैंने अभी बताया आपको कि सेम होगा. नेट फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सॉरी हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं. आई एम रियली सॉरी. ऑन Q2 इट विल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square. Okay, because of the induced electric field, the net electric field is E dash. Okay. Okay, so the second question is, a ring has charge Q uniformly distributed over its circumference of radius R. So the three parts in the question. The first part is, find the electric field E at point P, which is at a distance x from the center of the axis. The second part is, find x such that E is maximum, and the third part is, find E if x is much greater than R. But the thing is that we have learned the formulas for electric field for some simple cases, like for a uniform sphere or for a hollow sphere for point charges. So how do we do for this thing? That's a problem. So Shrikant will tell us how to do this question. See, exactly. You can't. It is a uniform charge distribution, and it is not the case of Gaussian surface also. So what should be done is, what we will do is we will assume, since it is uniform charge distribution, first let me tell you the charge density is lambda is equal to Q by 2 pi R. Since 2 pi R is the radius, Q is the charge. Okay. So we will do this problem also using point charge only, but we will assume a small angle subtended by a small portion, say d theta. Okay. So what will be the charge of that portion? The charge will be equal to lambda r d theta. Since r d theta will be the length and lambda is the charge density. Charge per unit length. Okay. So this is the charge of that small element. Yes. Say dq. Okay. So now this distance is x. This is our point P. So let us calculate the electric field at P due to this small element. Okay. So dE. Okay.
is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by 2 pi d theta into 1 by r square plus x square. See, r square plus x square is this distance. Okay. Exactly. And the remaining is charged by this is charge. Okay, so lambda is q upon 2 pi r, so r will get cut, so we will have this. Okay. Exactly. Now E will be directed in this direction. Yes. So if you think logically, if you add up all the small d theta elements, yes, so you will find that the net electric field in direction perpendicular to x will be 0. Yes, by symmetry we can say that the perpendicular to this line electric field will be 0 using symmetry. Yes. So we need to calculate only electric field components along this direction and add up. Yes. Okay. So along the axial direction, DE axial is equal to, we have to integrate. Okay. R square plus x square 3 by 2. Okay, so you simply take the component of E along the direction. I wrote E and then multiplied it with this theta. Okay. Cos theta. Cos theta. And here cos, how do you find cos theta? Cos theta is simply x by root over r square Plus x square. Okay. Using simple trigonometry. Okay, so you put it there and okay. So we get this. Okay. So solving this, we get E axis is equal to 1 by 4 pi epsilon naught qx by r square plus x square 3 by 2. This is also equal to net electric field at point P. So the integration you can do it by yourself. This is your exercise, and after doing the integration, we have this net electric field. Now, the second part of the question asks you to find x such that E is maximum. See, if you simply notice, if we place a charge at the center, it will not experience any force because of the symmetry. Okay. Yes. And if we place a charge at infinity, Yes. even then it is 0. Yes, because it's very far away. It is very far away. Yes. So, but there is electric field in between. So let us try to find out the point where it reaches maximum. Okay. So, so when it is maximum, we will have E dx is equal to 0. Yes. Exactly. Yes. Which implies q by 4 pi epsilon naught, which is common. And now I am differentiating this term. Okay. So solving this, we will get x square is equal to r square by 2. X is equal to plus minus r by root over 2. Okay. So at a distance of x is equal to r by root over 2, we will get maximum electric field. Okay. So now the third part of the question is very simple. We have to find E
if x is much greater than r. So from the first part, the equation of E is 1 by 4 pi epsilon naught. This equation. Yes, this is the value of E. Qx by r square plus x square power 3 by 2. Okay. So if we put x is much greater than r, we will find that r square is insignificant and we can ignore r square. Okay. So now we'll only have x square power 3 by 2. That makes it X cube. X cube. And x cube and x will get cancelled. So we will simply get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So X square. sorry, Yes. And X square. x square. Okay. So what conclusion can we get? Or like if the radius of the ring is so small, then it can be considered as a point charge. Exactly. So let's move on to the next question. Okay, so the overview of this problem was that is we just have to find the maximum value of E. For that we differentiated it and put it to equal to 0, and for that corresponding value of x we get, that's the maximum value of E for x is equal to r by root 2, and then in the third problem we just have to put x much greater than we r. learned how to write charge for a small element and then add up and use symmetry. Yes. Okay, so the third question is, in this question we have to find electric field. In the previous question also we used different elements and add up the electric field through each element and then integrate that in this question also, but here the question is little bit different. Here a ring of radius r has charge density lambda is equal to lambda naught for theta is an element of 0 to pi by 2 union pi to 3 pi by 2. That means from 0 to pi by 2 and pi to 3 pi by 2 the charge density will be lambda naught, and it will be minus lambda naught for the remaining angles. Okay, so what we have to do is we have to find the electric field at the point 0, 0, 2. 0, 0, z. 0, 0, z. Yes, sorry. Okay. So this is the x-axis, this is the y-axis, and z will be coming out of the plane. Okay. So if we whenever you see such a problem, always try to get a rough idea of how the charges are distributed. So there's a condition given, lambda is equal to lambda naught for these theta. Okay. So roughly if we draw, it will be lambda is equal to lambda naught for this. So say this is all positive. Yes, this is positive. And union this. Yes. Lambda is equal to minus lambda naught for remaining theta values. This is how the charge is distributed. Okay. Now you can go on solving this question the way we solved the previous question, but if you simply look at it from symmetrical point of view, we will find that the solution is very simple. So first let us consider Ez, that is electric field along z axis. Okay. At a point 0, 0, z. Okay. So you will find that the charge will be equally attracted by these charges as well as these charges, since all are equidistant. Yes. So Ez will be from symmetry 0. Okay, because the positive will have the opposite direction as compared to the negative. Exactly. Okay. So now let us consider Ex. If you consider Ex, that is electric field parallel to x-axis at a point 0, 0, z. You will see that
this portion and this portion cancels out each other's effect. Yes. And this portion and this portion cancels out each other's effect. Yes. So Ex is equal to 0. The same way for Ey, 0. Okay. This portion cancels out. This portion cancels out. Okay. So without even trying to solve the question numerically using integration or any such things, simply from symmetry we can say E is equal to 0. Okay. So in this question we just use symmetry. However, we can use the long method by calculation also. But by the diagram we can see by symmetry that the electric field will be 0.